Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, good evening, and a very warm welcome at Motherhood Club. A very special day in the history of Motherhood Club. Today, we are going to do something which is very different, which is very special. But before that, I'd like to read a few lines. I'm the hope in all my gloom. I'm the one who shall bloom. I'm the one who shall bloom, if not me, who shall hold me, for I am the one within me. I'm the happiness that brings a smile. I'm the one who has to walk the extra mile. I'm sure this gives you a little bit of a reminder that life has to be full of hope. Hope which brings in happiness, which brings in so much for us to sail through the challenges of life. Let me take you back in history, not very, very much in the history, but the recent past. 4th February, World Cancer Day, a day where 30 poets came together at the Motherhood Club platform, recited 30 different poems, creating hope for our cancer warriors. Today is a little bit of an extension to that, but what it is, I will share it in a while. Allow me to introduce our esteemed members, friends, and guests who have joined me today for this very, very auspicious ceremony, I would call it. With us is Mr. Sushil Bharti, founder Rahi Publications and director broadcasting Marva Studio. Our very own Dr. Indu Bansal, radiation oncologist, director at the Naryana Hospital, Monica Goel Diwan, Chief Cheering Officer, Motherhood Club, and of course, our very own Chief Happiness Officer, Ila Pachauri. And myself, Ekta, the founder and Chief Strategy Officer at Motherhood Club. So, what are we going to do? A seed that was sown a little before 4th of February took a little shape on 4th Feb 2022, got supported by the entire team of Motherhood Club, by Dr. Bansal and Sri Sushil Bharti. What was that? What exactly is going to happen today? I'm going to invite our Chief Happiness Officer to take over from here and share a little bit before we move ahead with the auspicious ceremony. Over to you, Ila. थैंक यू सो मच एकता. सबसे पहले ऑल द डॉक्टर्स ऑन द फोरम, स्पेशली डॉक्टर इंदु बंसल, अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू यू. डॉक्टर्स नहीं होते तो हम स्वस्थ नहीं होते. सो ग्रैटिट्यूड टू ऑल द डॉक्टर्स. एंड यस, on 4th February 2022 we celebrated, rather, World Cancer Survivor Day by holding a kavi sammelan or a poetic evening where we read poetries only on hope. जितनी भी हमारी कविताएं थी, सब कवियों की, कवियत्रियों की, वो कैंसर के मरीजों के लिए, सर्वाइवर्स के लिए एक उम्मीद की किरण जगाती हुई दिखती थी. तो वहीं से एकता का ख्याल था, हमारी फाउंडर एकता सहगल मल्होत्रा का ख्याल आया कि अरे, जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो हमें इसकी एक बुक बना लेनी चाहिए. सो क्योंकि उसमें इंदु भी हमारे साथ उस पे ऑन्कोलॉजी फोरम को रिप्रेजेंट कर रही थी उस पोइटिक इवनिंग में. तो डॉक्टर इंदु, एकता, मैं और मदरहुड टीम टीम की जो क्लब की जो टीम थी, हम सब ने मिलकर इसको थोड़ा और सोचा और वहाँ पर जन्म हुआ एक विचार का. इस किताब के लिए बीज बोया गया और वो किताब में वी डिसाइडेड दैट वी शुड हैव 100 poets, one poem each, and each poem should carry a message of hope for the survivors, for the patients, and for the caregivers as well. So here we are today. We got in touch with 100 poets, we collected the poems, we compiled the poems, and today we are about to launch the cover page of our anthology. And the cover page has been designed by none other than our talented artist, Dr. Indu Bansal. So now we'll invite Dr. Indu Bansal to throw some light on what made her conceptualize that particular design.
Okay, so a very good evening to all of the listeners and viewers who are watching this program. सबसे पहले मैं बिफोर आई से एनीथिंग अबाउट द बुक कवर आई वुड लाइक टू थैंक मदरहुड क्लब, स्पेशली एकता, ईला, मोनिका एंड ऑल एवरीवन एल्स जो जिन्होंने मदरहुड क्लब से इस बुक को लाने में एक बहुत ज़्यादा मेहनत की है. वो दिखता आसान है काम, बट a lot of hard work has gone behind this book. सो पहले हमारा विचार था कि सिर्फ हम एक कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम करते हैं, बट एकता का और मेरा डिस्कशन हुआ और ईला का डिस्कशन हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट डू अ पोइट्री सेशन. और फिर पोइट्री सेशन पे बात होते होते बात हुई कि चलो होप के ऊपर लिखते हैं, और फिर धीरे धीरे बुक के बारे में विचार आए, एंड फाइनली वी आर एबल टू डू इट. एंड सुशील जी ऑल्सो, थैंक्स अ लॉट टू सुशील जी, हु हैज ऑलवेज बीन देयर in all the endeavors, and he has always been there to support us in everything that we do. सो सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. हमने ये सोचा कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनका जब भी एक डायग्नोसिस होता है, उसके बाद बहुत उनके मन में विचार होते हैं. दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस. It could be grief, it could be pain, it could be anger, it could be sadness, it could be loneliness, it could be एनीथिंग, फियर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, इस तरह के बहुत सारे विचार होते हैं जो उनको हमेशा दुविधा में डालते हैं. और किसी भी एक कैंसर पेशेंट की जर्नी जो है वो उसकी अकेली जर्नी नहीं होती, उसमें उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं. उनका खुद का विश्वास, उनके परिवार का सपोर्ट, उनके वेल विशर्स का सपोर्ट, डॉक्टर्स की पूरी टीम, साइंस बिहाइंड दैट ट्रीटमेंट, नॉन मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, बहुत बहुत सारे लोग होते हैं. दे ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल. हम लोगों का इस बुक को लेकर उम्मीदों का इंद्रधनुष इस बुक का नाम रखा गया. उसके ऊपर भी बहुत विचार हुए. एवरीवन गेव अ लॉट ऑफ आइडियाज, एंड फाइनली बिकॉज द कॉन्सेप्ट वॉज होप, इसी उम्मीदों का इंद्रधनुष नाम को लेकर आई डिज़ाइन दिस कवर. अगर आप इस बुक को कवर जब हम लॉन्च करेंगे तो आप देखेंगे कि it has tried to depict various emotions that a cancer patient goes through. And I always tell, every emotion is normal, every emotion is genuine. हर इमोशन ठीक है, बट अगर हम उसमें थोड़ा सा होप का पौधा जोड़ देते हैं या उगा देते हैं, तो शायद कैंसर की जर्नी आसान हो जाती है और कैंसर से हम जीत कर लाइफ को बहुत खुशनुमा बना सकते हैं. तो अगर आप बुक कवर को देखेंगे तो उसमें एक साइड में थोड़ा सा डार्कर साइड है, हाफ ऑफ द फेस, एंड हाफ साइड ऑफ द फेस शोज सम हैप्पीनेस, कि आपने डिफरेंट इमोशंस को हमने डिफरेंट कलर्स से पेंट करने की कोशिश की है. और थोड़ा सा ये बताया कि जिस तरह से कैंसर किसी को जकड़ता है तो वो आपकी मानसिकता को भी उतना ही प्रभावित करता है. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, बट बेसिक concept is to create hope, to create positivity, to spread awareness. और बहुत सुंदर कविताएं हमारे पास आई हैं, बहुत बहुत प्यारा लिखा है सब लोगों ने, और सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, बट अल्टीमेटली सबका मैसेज शायद यही है कि हमें होपफुल रहना है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, क्योंकि ये भी जस्ट एक और बीमारी है जिससे जीता जा सकता है आराम से, अगर हम टाइम पे अपना चेकअप करें और अगर अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें. इसी कॉन्सेप्ट के साथ आई गिव द माइक बैक टू एकता, एंड शी विल थ्रो मोर लाइट ऑन द बुक. एंड आई वांट एवरीवन टू गिव अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर एकता, ईला, मोनिका, जिनसे उन्हें बहुत मेहनत की है. एकता हैज़ बीन रियली आफ्टर दिस बुक फॉर डे वन, सबका कंपाइलेशन, एडिटिंग, जूम मीटिंग, सुशील जी के साथ कोऑर्डिनेशन, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन. Has been a lot of hard work behind this book. So thanks Ekta, Ila, Monica, and everyone at the Motherhood Club, and all the contributors of the book uh, who have come to who have contributed their thoughts in this book. And Sushil ji, aapka thank you once again. तो मैं यहाँ पे सुशील जी को इनवाइट करना चाहूँगी कि एज अ पोएट हिमसेल्फ एंड एज अ पब्लिशर ऑफ आवर बुक. So the publisher of our book is Rahi Publication, which is founded and headed by Shri Sushil Bharti ji, and of course his love for poems, literature. तो सुशील जी आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग एक ऐसी बुक को लेके क्या हैं, और आपका जो सहयोग है हमारे साथ
उसके बारे में कुछ बताइए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एकता कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस मंच पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही एक खूबसूरत किताब की परिकल्पना की है और मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडिया जो होता है वो इट कैन चेंज द वर्ल्ड। तो ये जो एक आइडिया आया कि जो 100 जो पोएट्स हैं वो उसी के ऊपर एक विषय पर लिख रहे हैं। तो एक तरीके से एक नवीन प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। यूँ तो हमारे पब्लिकेशन हाउस में काफ़ी बड़े-बड़े राइटर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, निरंतर लिख रहे हैं एंड वी आर प्राउड कि काफ़ी अच्छे लोग इसके साथ पब्लिकेशन के जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कुछ नवीन कुछ विचार आता है, कोई नई चीज़ आती है निकल कर के, तो हमें लगता है कि ये भी एक साहित्य का एक अलग रूप है और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और ये एक ऐसा विचार था। इला जी तो बहुत अच्छा लिखती हैं, एकता जी आपने भी शुरुआत की, आप भी बहुत अच्छा लिख रही हैं और इंदु बंसल जी की जो हमारी जितनी भी एंथोलॉजीज़ हैं, उसमें भी पहले आपकी कविताएँ आई हैं। तो मैं आप सभी के लेखन से परिचित हूँ, मोनिका जी से मेरा उतना परिचय अभी नहीं है, तो मैं भी बहुत नहीं कह पाऊँगा। लेकिन जो अच्छा जो मुझे लगा वो ये लगा कि जब हम कैंसर की बात करते हैं, जैसे 4 फरवरी को कैंसर सर्वाइवर डे के ऊपर मुझे आमंत्रित किया गया था, उसमें माननीय संदीप मारवा जी भी उसमें पधारे थे। तो एक पोएट्री मैंने भी उसमें पढ़ी थी। व्हाइल राइटिंग द पोएट्री तो मुझे भी बहुत सारी इमोशन से गुज़रना पड़ा था उसमें लिखते हुए। मुझे भी लगा था कि शायद कैसा लगता होगा कि जब आप अपने को दूसरे के शू में डाल कर के देखते हैं कि जहाँ एक तरीके से दुनिया जो है वो आपके हाथ से फिसलती हुई नज़र आती है। ये जीवन जो है बहुत खूबसूरत है क्योंकि कहा भी जाता है हमारे शास्त्रों में कि 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है और मनुष्य का जन्म जो है वो श्रेष्ठ जन्म है। तो एक इस श्रेष्ठ जन्म के साथ में अगर ऐसी दुर्घटना होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को कैसा लगता होगा। क्योंकि वो बहुत कुछ करना चाहता है क्योंकि हसरतें हैं, इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, उम्मीदें हैं, अपने हैं, भावनाएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आपके पास एक सीमित समय है एंड विदिन दैट लिमिटेड टाइम आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लीजिए और अब जो है आपकी सरकती हुई ज़िंदगी जो है वो आपको ये मौत जो है निगल लेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ा चैलेंज है और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इन डॉक्टर्स का कि जो पल-पल अपने सामने ऐसे लोगों को देखते हैं। डॉक्टर इंदु तो खुद भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं। ये कितने ही ऐसे पेशेंट्स के साथ में रूबरू होती होंगी, कितने इमोशन से आप स्वयं ऐसे गुज़रते होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को कविता के माध्यम से, किसी एक विचार के माध्यम से अगर किसी के मन में कोई होप जगाई जा सकती है। मैं कल्पना करना चाहता हूँ इस किताब की कि अगर कोई व्यक्ति अपने बेड पर है और उसको ये बता दिया गया है कि वो इस दुरूह बीमारी से जो है वो ग्रस्त है और उसको उसके पास भी बहुत सीमित समय है और वो एक कठिनाई में है। तो हो सकता है कि आज जो हमारे जो 100 पोएट्स हैं, इनमें से किसी की कोई लाइन उसको पसंद आ जाए, उसके मन के अंदर कुछ भाव जगा दे, उसके मन के अंदर एक आशा पैदा कर दे, उसके मन के अंदर एक ऐसी उत्साह भर दे कि वो कहे कि नहीं मुझे जीना है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती है कि जब व्यक्ति जो है वो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि नहीं मुझे किसी भी कीमत पे आई हैव टू फाइट बैक। तो ये कहा भी गया हमारे शास्त्रों में भी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आपके मन को जितवाना है तो ये जो 100 योद्धा हैं इस कैंसर के विषय के ऊपर जो लिख रहे हैं, जो एक उम्मीद जगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे सभी लोग जो हैं उनके हाथ में ये किताब होगी और जब वो दुनिया से निराश हो चुके होंगे, हताश हो चुके होंगे, तो ये कहीं न कहीं किताब जो है उनको एक एक संबल देगी, उनको एक मार्गदर्शन देगी, उनको हौसला देगी कि नहीं, अभी ज़िंदगी जो है वो बाकी है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये एंथोलॉजी जो है राही पब्लिकेशन से छप रही है क्योंकि हम जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम नए विचारों के साथ में हमेशा चलते रहे हैं। नवीन राइटर्स के साथ में हमने हाथ से हाथ मिलाया है, उनको हमने आगे बढ़ाया है। उनके अंदर जो भी भाव हैं, उनको हम निकालने की बात करते हैं कि वो अपनी बात आगे आकर के कहें क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर कुछ भी कोई चीज़ खूबसूरत है,
तो आपकी मन की भावनाएँ हैं और मन की भावनाएँ जो हैं जब शब्दों से व्यक्त होती हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया का निर्माण होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज का ये मौका है, बड़ा पावन मौका है कि आप सभी के प्रयासों से एकता जी, इला जी, इंदु जी, आप सभी ने बहुत मेहनत की है। हम लोग कई बार इस पर बैठे हैं, कई बार विचारधारा बनी है। छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के आप बहुत कॉन्शियस रहे हैं और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ में, बड़ी संवेदनशीलता के साथ में आप इस किताब को लेके आ रहे हैं। ये और भी खूबसूरत बात है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस किताब को कितनी जल्दी आएगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की जो डेट्स हैं, वो भी डिसाइड हो गई हैं। पहला, दूसरा और तीसरा जो सितंबर है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम करने वाले हैं। तो उसमें किसी एक दिन हम इस किताब का लॉन्च ज़रूर करेंगे और हमें खुशी होगी कि वो जितने भी पोएट्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक थैंक यू यू। सुशील जी। तो मैं सभी को एक बार फिर से बता दूं कि लॉन्च ऑफ द बुक की डेट सुशील जी ने शेयर की है, 1st, 2nd, 3rd September at the Global Literacy Festival, which is organized by Marva Studios. And I think it is a super great opportunity for this book to be launched there by the dignitaries who will be a part of that event. And trust me, I have attended this event, and so has Indu also has attended. हमारी anthologies भी वहाँ पे पहले आ चुकी हैं, इला भी रह चुकी हैं. It in itself is a moment of pride to have your book being launched at such a august platform and in front of the august gathering. थोड़ी सी चीज़ें बोलना चाहूँगी. This book has 100 poets. We have a few poets who are based overseas. We have doctors. We even have cancer warriors who have either fought this or are still fighting that battle. And to read what they have to share actually, I think is a big testimony that this initiative that has been taken is on the right track. So I think without wasting much of our time, it is important that we show you what we have gathered here for. So just give us a moment. Just a minute. एक second. So that, ladies and gentlemen, I hope you can see the book which Indu was describing. किताब का नाम उम्मीदों अभी का नहीं दिखा है, इंद्रधनुष. एकता विजिबल नहीं, Not, नहीं हुआ. It is yeah, not. not, it no, is not not. yet. Not. I can see it. It's shared. No. No, but we It's not. can't see it. Okay, one moment. I'll try again. हाँ. Yeah. क्या ऑडियंसेस को दिखा था? Can you see now? No. Yes. Yeah. Yes. 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 All right. So, ladies and gentlemen, this is the much awaited book cover of उम्मीदों का इंद्रधनुष, कैंसर के साहसी योद्धाओं को समर्पित. अ, जैसा कि बताया गया है कि इसका कवर जो है वो डॉक्टर इंदु बंसल ने खुद पेंट किया है, इंस्पायर्ड बाय a picture that she saw which related to the emotions that she has experienced with her patients. मल्टीपल थॉट्स आ सकते हैं आपके माइंड में इस कवर पेज को देखते हुए कि आपने कुछ हेडगियर पहना हुआ है और आप सारी नॉइज़ को कट कर रहे हैं ताकि आप अपने विश्वास पे विश्वास करें.
ये मेरा विचार है। आई एम श्योर ऐसे ही सबके माइंड्स में ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे। अगर आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, टू लुक एट द बुक कवर, राइट हियर इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग। Ila, Indu, Sushil ji, Monica. मैं कम इन। एकता जी मैं Yeah, हाँ एकता जी पहले मैं कहना चाहता हूँ जी। जी, इसमें जो खूबसूरत बात है, जब मैंने पहली बार ये पिक्चर देखी थी, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक इंसान है कि जो तमाम सारी चीज़ों के अंदर ये बहुत सारे इमोशंस हैं जिससे घिरा हुआ है ये। और उसके बाद आप देखते हैं कि इनकी आँखों में एक चमक है और वो एक होप है, एक उम्मीद है। जो कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये इंसान जो है ये गिरने के लिए तैयार है या डूबने के लिए तैयार है। वो बहुत ही सशक्त तरीके से उसकी आँखें ये कह रही हैं कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। बहुत बिल्कुल, बढ़िया। बिल्कुल सही जी। कहा। बहुत बढ़िया। इला, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं भी यही एक्चुअली जो सुशील जी ने कहा है उसी को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ कि जो इनके आसपास हमको टेंटिकल्स दिख रहे हैं, जो सांप जैसे जो आपको गर्दन के आसपास दिख रहे हैं, उससे उसके बावजूद कि अगर कैंसर ने उनको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है अपने पंजों में, तब भी उनके फेस पे जो कलर्स हैं वो इस बात की गवाही है कि वो इस चीज से परेशान नहीं है, वो पूरी तरह से उम्मीद से भरे हुए हैं। और इतने कलर्स ये दिखाते हैं कि यस, द पेशेंट विल कम आउट ऑफ इट, द केयर गिवर्स विल कम आउट ऑफ दिस डिप्रेशन। बिकॉज यहाँ मैं केयर गिवर्स की भी बात ज़रूरी यूज करना करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि जो पेशेंट है वो जितना भोगता है वो एक अकेला है, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी फैमिली और स्पेशली जो अटेंडेंट्स होते हैं वो उनकी तकलीफ को देख के बहुत परेशान होते हैं और रोते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी एक उम्मीदों का इंद्रधनुष है। और एक एक कविता क्योंकि हमने पढ़ ली है, कितनी ही कविताओं को पढ़ के खुशी के आंसू आए हैं, अंदर से उम्मीदों ने हिलोरें ली हैं। एंड डेफिनेटली हम बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इस बुक को सबको डेडिकेट करते हैं। थैंक यू सो मच। Absolutely, absolutely. So this is the book cover. Monica, आप कुछ कहना चाहेंगी before we proceed further? आई थिंक सुशील जी और ईला ने इसका काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया है ऑलरेडी। आई जस्ट ऐड वन लाइन कि ये जो पिक्चर है, दिस इज फॉर मी, माय इंटरप्रिटेशन वुड बी दैट नॉट ओनली कैंसर वॉरियर्स एंड केयर टेकर्स, आई थिंक जिंदगी का निचोड़ है इसमें। क्योंकि जिंदगी आपको कभी भी एक ही कलर, एक ही फीलिंग, एक ही इमोशन नहीं देती है। इट कीप्स bringing into you different kinds of feeling, different kinds of emotions at each given point in time. And as people, as human being, how do we handle it is in our hands. And that only can happen when you have the right people around you, when you have the right support system, when you have the right caretakers, and you have the hope in your heart. So this is what predict interprets for me. Absolutely. And if you look at it, there is a reflection at the back, Yeah. which actually shows that the world is trying to tell you, or your problems is trying to tell you, that you are bleak, you're weak, but you are actually strong and bold and vibrant to achieve all that you wish to. So multiple interpretations of a book cover, whatever you like. We would love to hear your interpretations also. There is a comment that has come that Tapasya is saying it is like life seen in spectrum of colors. Yeah. एंड राजपाल जी कह रहे हैं दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है, उम्मीदों का दामन ना छोड़ना साथी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो this is what we wanted to share with all of you. And I would now request Monica to extend a vote of thanks to everyone who has worked on the book, as well as our esteemed contributors, our publisher, because there is so much of effort that has been going from conceptualization to the challenges to when the final outcome will be in front of all of us. Thank you, Ekta. Thank you for giving me this opportunity to speak on behalf of everybody. In fact, after hearing all of you and seeing the book cover, I'm actually overwhelmed with multitude of emotions. It's like, you know,
So much has gone into this book to create this book, starting from ideation to execution. And then today we are launching the book cover. And very soon we will be launching the book. So the journey definitely has been fantastic. So, to start with, on behalf of all the 100 participants in this anthology, I propose a heartful vote of thanks to the entire MHC team, Dr. Indu Bansal and Sushil Bharti ji from Rahi Publications for ideating and executing this wonderful anthology. And as all of you have already mentioned, this is a wonderful compilation of amazing, heartfelt, and real poems written by all of these 100 talented poets all across the world, which is dedicated to the cancer warriors and the caretakers. And honestly, if you ask me as a person, this seems like a dream come true for many of us, and would thus express our heartfelt gratitude to the entire team who has worked collaboratively and passionately to bring this to us all together and provide a very, very thoughtful and a wonderful platform for all of us. And as contributors, very honestly, it's like we have written a poem, given it to you, and that's it. After that, you asked for a picture and a write up, we gave it to you. We can only imagine the kind of hard work and the efforts which probably would have gone into making this happen. As Ila mentioned, that getting the 100 poets on platform, getting the poems from them, editing each one of them, and ensuring that the language is correct, the spacing correct, and the formatting is correct, everything is done well within time. It definitely asks for some passion and some lot of hard work. So once again, on behalf of the entire team who have participated, who have contributed, an earnest thanks to the entire team of MHC, Dr. Bansal, Sushilji, and I would request a huge round of applause for everybody. Ekta, I would also like to say something. I Sure. would, apart from extending a lot of thanks to Motherhood Club, without which we would not have seen this day, because idea was conceptualized and finally we are reaching, and one day we would be holding the book. So this journey has been really tough, but at the same time, I would like to say thanks to the contributors who have monetarily helped us in bringing this book. So I would like to give my heartfelt thanks to Mr. Manish from Newcore Biotech. They are a company who looks after oncology products, and they were kind enough to sponsor some amount for this book. So Mr. Manish from Newcore Biotech, and also from Zyomera Biosciences, Mr. Pradeep. That's a new company, and they have come up with a saliva spray so that patients don't get dryness of mouth. So they were also kind enough, and they didn't know me much, but I interacted with them just few, maybe 2 3 months back only, but still they were ready to support us for launching this book. And of course, Agarwal Center for Diabetes and Cancer Care, my team, so, and Oncology Forum, which helped us in holding with whom we held the first poetry event on 4th Feb, World Cancer Day. Ekta and Motherhood Club hosted that evening. It was a very wonderful evening. So without these contributors, and of course each and every poet who have जिनको बहुत कम time मिला, but still they came up with their ideas, and everyone ensured that it's a positive approach to life. उन सब का भी बहुत बहुत थैंक्स मैं आज बोलना चाहूँगी. एंड एक चीज़ और सबको कहूँगी, बिकॉज दिस इज़ फॉर कैंसर वॉरियर्स. So I would request all of you to please buy this book and spread this word around, because the proceeds from this book would go to help a cancer patient. So this is a charitable event. So I would encourage everyone to buy this book, because इसकी हम free copies share नहीं दे पाएंगे. Ekta would tell you more about it, but please spread awareness about this book, because I think this would be the first book of its kind which would be bringing on a topic for bringing hope to cancer warriors. Over to you, Ekta. Yeah, absolutely right, Indu. That is true that
all our contributors will need to purchase this book because as you all know that even on 4th of February, Motherhood Club had raised funds for a cancer patient who's undergoing her treatment right now, and those funds are being judiciously being utilized for the chemotherapy and all the other requirement that is there for her treatment. So we don't want to just limit this book as a book for someone to read and have hope, but genuinely create a hope where the treatment can be supported. So we urge each one of you to please purchase a copy or many copies as you wish to, so that those proceeds can be used to support the cancer patient, so that to make the patient into actually a warrior. So with this, I think we are pretty much reaching the end of our auspicious event today with everybody's support. And I think it's always a team who wins together. And that is a reflection of this event today, that this book cover is launched and you have the dates for the poetry book to be launched. For those who are outside Delhi, book your tickets, and trust me, you would love the event at the Global Literacy Festival. So thank you everyone. Thank you Sushilji, thank you Indu, Ila, Monica, and everyone who's watching us on Facebook, YouTube, and LinkedIn for sparing time and being with us for this very, very special moment for all of us. Thank you, everyone, and take care. Thank Thank you. Bye you. Thank you. Take bye. care. Stay healthy. Thank you. Thank you. Thank you. My